हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं वो राज देसा है। अभी फिलहाल अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 पर आज जर्नी होने वाली 14807 ट्रेन नंबर जोधपुर से चलकर दादर की ओर जाने वाली जोधपुर दादर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में हमारी जर्नी होने वाली 463 किलोमीटर की जर्नी होने वाली आज। मैं हूँ फिलहाल अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 पर। बाकी हमारी जगह जर्नी अहमदाबाद से लेके जो बोरोली तक होने वाली है। इस ट्रेन में मज़ा आने वाला जर्नी में। આપણે થોડી है बाईस थोड़ी आप तो આપણે का तो कही है 14। अरे हाँ वंदे भारत है આપણે को वंदे भारत तो 26 है मन के तो बात है मन के 26 थोड़ी मन के तो 25 है। 26 85 26 तो वही है। अहमदाबाद जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे आने का टाइम था 1:35 पे और 1:50 पे निकलने का टाइम था। एंड 10 मिनट का अपना हॉल्ट है जोधपुर दादर एक्सप्रेस का 14807 ट्रेन नंबर। अब यहाँ से नॉन स्टॉप रहेगी वडोदरा जंक्शन तक। चलो ओवरटेक आपको बता दो, क्रॉसिंग बता दो कुछ अच्छी खासी। ओवरटेक कुछ क्रॉसिंग सबको बता दो यहाँ पे। फिलहाल तो अहमदाबाद जंक्शन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट अभी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। हमारी ट्रेन जोधपुर दादर एक्सप्रेस 463 किलोमीटर की जर्नी हमारी होने वाली है अहमदाबाद जंक्शन से लेके बोरोली रेलवे स्टेशन तक। देखते हैं कब हमें पहुँचाती है, कहाँ ओवरटेक मिलता है हमें। वंदे भारत को देखने वाली बात है।
अभी आनंद जंक्शन को स्किप करने वाले हैं हमारी जोधपुर दादर एक्सप्रेस 14807 ट्रेन नंबर, जो अभी आनंद जंक्शन को स्किप करने वाले। आपको पता है आनंद जंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट। एक लाइन आपकी गोधरा के लिए जाती है यहाँ से पीछे से आनंद से, और एक खंबात के लिए ठाकुर के लिए। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है आनंद। और अमूल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला भी यहीं पे है, आनंद जंक्शन पे ही। अमूल डेयरी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस अमूल डेयरी पे ही है सबसे ज़्यादा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी आनंद जंक्शन को हमारे स्किप करने वाले हमारी ट्रेन। चलो दिखा दो आपको स्किप आनंद जंक्शन को, तो मिलता होगा स्किपिंग की। आनंद जंक्शन से स्किप कर रही है स्लोली हमारी ट्रेन। यही लाइन जाती है गोधरा के लिए, छायापुरी होते हुए। ये लाइन निकल जाएगी छायापुरी होते हुए गोधरा के लिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। उस तरफ एक खंबात और ठाकुर के लिए लाइन, जहाँ से सुबह सुबह मेमो जाती है लोकल। आनंद जंक्शन स्किप। और हमारे ही पीछे आ रही है वंदे भारत 20901 20902 ट्रेन नंबर, जो हमें ओवरटेक करेगी। कहाँ पता नहीं, लेकिन करेगी ज़रूर। उस तरफ है लाइन खंबात और ठाकुर के लिए। चलो मैं आपको भी दे रहा हूँ, ये रहा अमूल का। ये रही, ये सामने लाइन निकल जाती है खंबात और ठाकुर के लिए। तो बुलेट ट्रेन का काम देखो जोरों शोरों से चल रहा है। सामने देखो बढ़िया सा ब्रिज बन रहा है बुलेट ट्रेन के लिए।
पे आने वाला है स्टॉप वडोदरा जंक्शन, जो 100 किलोमीटर के बाद हमारा पहला हॉल्ट होने वाला है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जोधपुर दादर एक्सप्रेस का, यानी हमारे लिए फर्स्ट हॉल्ट होगा। और वहाँ से देखो रतलाम वाली लाइन भी आ रही है हमारे साथ मर्ज होने वाली है। रतलाम वाली लाइन हमें मर्ज करने वाली है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसके लिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन जाता है। एक हम आ रहे हैं अहमदाबाद वाली लाइन और सामने से आ रही है वडोदरा वाली अपने रतलाम वाली लाइन, और एक लाइन निकल जाएगी एकता नगर के लिए। इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, तो हमारे साथ मर्ज हो रही है अभी। ये आके मर्ज हो गए हमें रतलाम वाली लाइन। तो वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन अभी आने वाला 100 किलोमीटर के बाद हमारा पहला हॉल्ट जोधपुर दादर एक्सप्रेस का। अब यहाँ से एक लाइन आपके रतलाम वाली निकल जाती है और हमारे अहमदाबाद वाली लाइन, और एक लाइन एकता नगर के लिए निकल जाती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे रिटायरिंग खाने पीने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो मैं आपको अराइविंग बता दूँ। ये दाहोद वलसाड़ के रेक खड़े वहाँ पे, दाहोद वलसाड़ के रेक है यहाँ पे, यानी वडोदरा वलसाड़ जामनगर बहुत सारे रेक नंबर इसमें। चलो 100 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारा ये पहला हॉल्ट होने वाला है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म 1 पर हमारी ट्रेन आई है जोधपुर दादर एक्सप्रेस।
जंक्शन के प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। बराबर अपने निर्धारित में 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था बड़ौदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जोधपुर दादर एक्सप्रेस। आप देखते हैं इसको ओवरटेक कहाँ पड़ती है। और उस तरह प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही है जो नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से अहमदाबाद की ओर जाने वाली है। चलो उसकी मैं आपको क्रॉसिंग बताता हूँ जैसे ही हमारा बड़ौदा जंक्शन निकल जाता है। अपने यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 3:25 में आने का टाइम था, 3:30 में निकलने का टाइम था। बराबर निर्धारित समय से निकल रहे। बाकी तो आपको पता है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन एक लाइन आपकी रतलाम वाली, एक लाइन अहमदाबाद वाली और एक एकता नगर वाली इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है वडोदरा रेलवे स्टेशन। फिर बाद में मिलता हूँ, फिर मैं आपको 1-2 क्रॉसिंग दिखाने के बाद में मिलता हूँ मैं आपको ओवरटेक के लिए। चलो अपनी सीट पे भी जाता हूँ थोड़ा, और उसके बाद मैं अभी थोड़ा क्रॉसिंग दिखा दो 1-2, फिर आपको सीट पे फिर ओवरटेक बताता हूँ वंदे भारत का जो पीछे आ रही है 20902 ट्रेन नंबर गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल है वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12471 ट्रेन नंबर क्रॉसिंग। स्वराज सुपरफास्ट की क्रॉसिंग होने वाली है हमारे साथ। ट्रेन नंबर 12471 ट्रेन नंबर स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब जिस ट्रेन की क्रॉसिंग हो गई है वो 12471 ट्रेन नंबर स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बैंड्रा से चल के माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली, इसकी क्रॉसिंग हमें वडोदरा से जस्ट विश्वमित्री के आसपास हुई है। क्या बोल रहे हैं भाई? गरीब रथ एक्सप्रेस बैंड्रा से चलकर दिल्ली से रेल लेके जाने वाली है। जो आने वाला हॉल्ट है भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। 4:21 का टाइम है, 4:23 का टाइम है निकलने का यहाँ से भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी ट्रेन आई है। भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, 4:21 का है, 4:23 निकलने का टाइम है। यहाँ पे हमारी जोधपुर दादर एक्सप्रेस का टाइम। बाकी गाड़ी बढ़िया रफ्तार में भगाई है गाड़ी। इसके बाद अगला हॉल्ट डायरेक्ट सूरत रेलवे स्टेशन आने वाला है। अब ये ओवरटेक कहाँ मिलता है हमें देखना होगा। वंदे भारत हमारे पीछे पीछे ही चल रही है, जस्ट मुंबई की ओर जा रही है 20902।
हाँ तो निकल गए दिखते भी। हमारा डिपार्चर हो चुका है यहाँ से जोधपुर दादर एक्सप्रेस का, बड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म 2 से हमारी ट्रेन निकली यहाँ से। अभी नर्मदा रिवर आने वाला थोड़ी देर में, जस्ट बाजू से। हाँ जनरल की पब्लिक सब इसमें घुसे, विदाउट टिकट वाले सब घुसे इस ट्रेन में। क्या बोले चलेगा, रिजर्वेशन कोच में सब भरे भरे हुए। आपको थोड़ी देर में बता दो सब कुछ। नर्मदा रिवर क्रॉस हो रहा है हमारा। एक बार अपना आमा रिटर्न में Shataब्दी नहीं मारे इतना
स्टैचू ऑफ यूनिटी चलो अभी सनसेट भी होने आ गया है। बढ़िया सा सनसेट भी होने आया है। बॉस जर्नी महाराज एक्सप्रेस बेहतर। महाराज एक्सप्रेस निकल गए।
श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। नवसारी रेल्वे स्टेशन के
चलो बोरोली रेलवे स्टेशन है बना ख़त्म। चलो हमारी जर्नी है भी ख़त्म। जोधपुर दादर एक्सप्रेस 14807 ट्रेन नंबर।